Let's come on to the part of the formats of the different statements. Within that, the very first that we'll talk about is the trading account. As I said earlier also, manufacturing account will not be discussing in this part. In our regular lectures of foundation, there will be having the discussion with reference to manufacturing account. So, what is the format of a trading account? If I am preparing a trading account, the purpose and reason of preparing trading account is to ascertain the total gross profit of the business. And that's why trading account includes only and only such items which are directly related to the core activity of the business. And that is the reason what we will include in our trading account are only the direct incomes and direct expenses. So format is something like this. Let's say this is my trading account for the period or year ended ... whatever is the period for which you are preparing it. जब आपने लिखा for the year ended, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस आएंगे. That's why you are using the term as for the period ended. Now, as I said, only direct expenses will be included. मतलब क्या, मैंने जो गुड्स परचेज किए या जो गुड्स प्रोड्यूस किए वो बेसिकली सेल करने के लिए परचेज किए. देयरफॉर टू purchases. Now trading account and profit and loss account are basically the nominal accounts. Why? Because these are prepared to calculate the profits. So it includes only the incomes and expenses. और क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो रूल रिमेन्स द सेम, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स. राइट. So whatever are the purchases that I'll show in the inner amount column, and from that you can add one more column in here for the amounts, that is called as inner amount column. Less subtract therefrom the purchase returns or the return outwards, whatever those are, and the balancing figure will normally be going out. अब जब आपने गुड्स परचेज किए तो हो सकता है कि आपने इन परचेज्ड गुड्स पे कोई एक्सपेंसेस भी किए हों, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन द फॉर्म ऑफ कैरेज, in the form of freight, in the form of wages. We call these all as the direct expenses. क्यों? क्योंकि those are related to the core primary activity of the business or not. So all those direct expenses will come in the trading account onto the debit side. To direct expenses as to what? Carriage inwards. Why so? अगर गुड्स भेजने पे, गुड्स बेचे हुए जो भेजे हैं उसके लिए अगर कैरेज का खर्चा किया रहेगा तो दैट इज कॉल्ड एज कैरेज आउटवर्ड. दैट इज आफ्टर सेल्स एक्सपेंस और नॉट, एंड देयरफॉर दैट इज कंसीडर्ड एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. So carriage inward will come under profit and loss account. I'm sorry, carriage inward will come under the trading account, but carriage outward, being an indirect expense, will go to the profit and loss account. Then wages, freight, again freight inwards, cartage, loading.
These all are nothing but what we call as the direct expenses. क्योंकि ये purchased goods से related है तो इसीलिए उसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड कर रहे हैं. अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आपने जितने गुड्स बनाए या जितने गुड्स आपने खरीदे वो सारे के सारे बिक चुके, और अगर सारे नहीं बिके हैं तो इसका मतलब देयर मस्ट बी सम स्टॉक विच इज स्टिल रिमेनिंग अनसोल्ड, एंड इफ देयर इज एनी स्टॉक विच इज अनसोल्ड इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द एक्सपेंस ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर. देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज मैचिंग कंसेप्ट. What is that matching concept? You are expected to match the expense for the period with the income for the same period. तुम जिस साल की इनकम रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जिस साल में इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो, उसी साल में उससे रिलेटेड जितना भी खर्च किया है वो भी रिकॉर्ड करना जरूरी है. तो अगर मैंने सपोज 5 करोड़ का स्टॉक खरीदा और उसमें से अगर मेरे पास 25 लाख का स्टॉक बच गया या फिर 40 लाख रुपए का स्टॉक बच गया, दैट 25 lakh worth of stock, that 40 lakh worth of stock cannot be considered as the expense of current year. क्योंकि मेरे परचेस में तो पूरे 5 करोड़ इंक्लूडेड है, but that cannot be considered as expense of current year, क्योंकि वो 40 लाख का स्टॉक इस साल में बिका ही नहीं, और अगर वो इस साल में नहीं बिका है तो उसे हम इस साल का खर्च भी ट्रीट नहीं कर सकते हैं. And that's why we do the accounting of something called as closing stock. So whatever is the unused stock, whatever is the unsold stock, that is valued and accounted in the form of the closing inventory or the closing stock, and that is shown. अब उसका हमारे पास दो तरीका है. एक, आप परचेस में से उस क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, या दूसरा आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में अलग से अकाउंट कर दो. सो व्हाट डू वी डू? वी शो इट इन माय trading account on the credit side, because the closing inventory of one period becomes the opening inventories for the next period. Is it point right? अब खरीदे हुए गुड्स बेचे भी होंगे, बेची होगी तो वो तुम्हारी डायरेक्ट इनकम हुई, और अगर डायरेक्ट इनकम है दैट विल कम इन व्हाट? द ट्रेडिंग अकाउंट ऑन टू द क्रेडिट साइड. क्यों? मैंने कहा ट्रेडिंग इज अ नॉमिनल अकाउंट. व्हाट इज द रूल फॉर नॉमिनल? डेबिट द खर्चास एंड क्रेडिट द इनकम्स. देयरफॉर ऑन टू द क्रेडिट साइड बाय सेल्स. अगेन सारे सेल किए हुए गुड्स सिर्फ बिके हैं, वापस कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है. There can be returns also or not. So less return inward or sales return. Whatever is the balancing figure that will appear on the credit side outer column. अब जैसे आपके इस साल में क्लोजिंग स्टॉक बचा, ये क्लोजिंग इन्वेंटरी अगले साल के लिए हमारे लिए खर्च होना चाहिए नहीं, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ 1 year विल बी सोल्ड इन द नेक्स्ट ईयर और नॉट. क्लोजिंग इन्वेंटरी फॉर 1 period बिकम्स द ओपनिंग इन्वेंटरीज फॉर द नेक्स्ट पीरियड. तो जैसे हमने इस ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, वैसे ही इसी में पिछले साल का भी तो क्लोजिंग इन्वेंटरी आ सकता है नहीं, एंड दैट विल बिकम व्हाट? टू ओपनिंग इन्वेंटरी. Am I going good? So whatever is the closing inventory for 1 year becomes the opening inventory for the next year. Did you people understand? Now I'm not yet including the concept of goods distributed, the concept of goods lost, the concept of the goods being stolen. Why?
बिकॉज दोज कम इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट्स जनरली. अब वो क्या होती हैं एडजस्टमेंट्स और कैसे उसका ट्रीटमेंट देना है वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, और उस समय पे उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इंपैक्ट होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, नाउ if I find that credit side of my trading account is greater than the debit side, credit is incomes, debit is expenses. Credit मतलब incomes, debit से मतलब expenses से अगर ज्यादा है तो मतलब प्रॉफिट हुआ है नहीं. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? टू gross profit carried down. Why carried down? Because whatever is the balancing figure of trading account that comes under the profit and loss account, and at the same time if debit is greater than credit, debit is kharchas, credit is incomes. If debit is greater than credit, that means kharchas are more than incomes or not. In that case, this will be called as by gross loss carried down. So whatever is the balancing figure in the form of gross profit or in the form of gross loss, that gets transferred to what? To the profit and loss account. Am I right? मैं यहां पे आपको सिखाते समय इन दोनों फॉर्मेट्स को अलग अलग सिखा रहा हूं, ट्रेडिंग अलग, प्रॉफिट एंड लॉस अलग. हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग इसको कंबाइंड भी बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट 6 से 8 लाइन हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम दिखाते हैं और अगले पूरे के पूरे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन, विच इज रॉन्ग. You should be preparing a separate trading account, a separate profit and loss account and a separate balance sheet of course. However, आज की तारीख में हम लोग जब इनकम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, those are not prepared in this format. Those are prepared in the vertical format. अब वो vertical format क्या होता है वो भी सिखाता हूं. पहले we'll complete this. Just finish trading account. Finish it. छापो. मतलब नहीं, ये डेबिट और क्रेडिट नहीं है, ये दोनों अमाउंट कॉलम्स है. दिस इज इनर अमाउंट कॉलम, दिस इज आउटर अमाउंट कॉलम. क्यों? मुझे परचेस में से रिटर्न सब्ट्रैक्ट करके बाहर लिखना है, ये नहीं. तो टू आइडेंटिफाई हाउ मच इज द टोटल परचेस, हाउ मच इज द टोटल रिटर्न, उसके लिए इनर अमाउंट कॉलम और आउटर अमाउंट कॉलम बनाते हैं हम लोग. Only direct incomes and direct expenses.
Done? Inner amount column, outer amount column. What is more important for us is the outer amount column. Done? Let's look at the format of the profit and loss account. Profit and loss account is also the part of income statement only, and that's why even the profit and loss account will be prepared for the year ended only. As I said earlier, what we are currently discussing is only the horizontal format, the normal format. However, in the case of the large organizations, multiple national corporations, these kind of organizations do not prepare this horizontal format, they prepare the vertical format of balance sheet and income statement. How do they prepare it? We'll talk about that as well. So this is our profit and loss account for the year ended अब आपके ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट था, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे वो ग्रॉस लॉस हो, दैट विल कम इनटू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट. If I assume there is a gross profit, on the credit side we'll have by gross profit brought down. All right, and then we'll be having the various indirect and non-operating expenses and incomes.
Indirect, something which is related to the day-to-day activities of business but not to the primary activity, that is indirect. नॉन ऑपरेटिंग, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है फिर भी वो खर्च हो रहे हैं, फिर भी वो इनकम हो रही है. Those incomes and expenses is what we call as the non-operating amounts. And the non-operating expenses, non-operating losses, non-operating incomes will come into your profit and loss account only and not into the trading account. All right? Let's observe the format further. To अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्राइमरीली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको हेडिंग्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली एक्सपेंसेस लिख सकते हो. मैं हेडिंग्स क्यों लिखवाता हूं? क्योंकि आपको ये रियलाइज होगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्च है, ये फाइनेंस से रिलेटेड खर्च है, ये सेल्स से रिलेटेड खर्च है. तो इनसे रिलेटेड जो कुछ भी खर्च होंगे वो सारे के सारे कहां जाएंगे? इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So to administrative expenses, which may include depreciation, which includes electricity, telephone expense, सैलरीज, ये जितने भी मैं आइटम बता रहा हूं ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इलस्ट्रेटिव है. राइट? देयर कैन बी मल्टीपल ऑफ दोज एक्सपेंसेस ऑफ द सिमिलर कैटेगरी. राइट? देन सेलिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. व्हाट इज दिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? आपने जो गुड्स बेचे उसके लिए आपने एडवर्टाइजमेंट करवाई, मार्केटिंग करवाई, तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस. आपने आपके कस्टमर्स को गुड्स भेजे, कैरेज आउटवर्ड, उससे रिलेटेड खर्चा. आपने कस्टमर्स को क्रेडिट पे गुड्स भेजा, कुछ कस्टमर्स ने आपका पैसा डिफॉल्ट किया, बैड डेट्स. दीज ऑल अमाउंट्स आर कंसिडर्ड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग, carriage outward, bad dates. These all amounts will be considered as your indirect expenses because those are related to the amounts after sales. Then finance cost. फाइनेंस कॉस्ट मतलब जो आपने बिजनेस के लिए लोन से ले रखे हैं या बैंक के लिए आपको कोई चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, तो दोज आर कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल कॉस्ट और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. दैट इज इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, these will be considered as finance related expenses. All right. Then on the credit side we'll have the indirect expenses by indirect incomes that may be related to commission, bonus, discounts. These all will come on to the P&L account credit side. Is it right? Now there can be a situation where you had made the investments, and on those investments you are getting the returns in the form of dividend or interest. Such amount is called as non-operating income. आपने कोई एसेट बेची, एसेट बेचने पे आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, that is considered as non-operating income. So those non-operating incomes will be credited to the profit and loss account. Non-operating income.
that is profit on sale of asset, dividends and interest. These all amounts will come into your profit and loss account. Similarly, into your P&L account onto the debit side you'll have non-operating losses. मैं वापस कह रहा हूं आपको एग्जामिनेशन में हेडिंग्स जैसे मैं लिख रहा हूं टू एडमिनिस्ट्रेटिव, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टू फाइनेंस कॉस्ट, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है. Non-operating expense or losses can be loss on sale of asset, loss by theft or fire, these are considered as non-operating losses or expenses. Again, profit and loss account is also a nominal account. So if in my profit and loss account credit is greater than debit, that is a profit, income or not. So to net profit is how we identify that. Alright, पर वहीं अगर डेबिट क्रेडिट से ज्यादा हो गया तो there will be a loss. If debit is greater than credit, then there will be the by net loss, and this profit or loss of the business is ultimately transferred to capital. This is added to capital. And this is subtracted from capital. Am I right? I'll just try to show you one of the format of the vertical इनकम स्टेटमेंट कि इसी स्टेटमेंट को आजकल प्रैक्टिकली वर्टिकल स्टेटमेंट करके कैसे प्रेजेंट किया जाता है. आई थिंक आई हैड द बैलेंस शीट. किसी तो कंपनी की डाउनलोड की थी मैंने. ये जो मैं कह रहा था ना आपको कि आपको जो कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, देखना करना उसको. काका बुला रहे, वो बंद करके चालू करेंगे फिर.
जस्ट अ मोमेंट, क्या वो बुलाना। ये बंदे का एनुअल सैलरी कितना मालूम है क्या? ये बंदे का एनुअल सैलरी कितना मालूम है? सिर्फ 120 करोड़। चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। काय तर तुमची आठवण आली आम्हाला. हो, तुमची आठवण आली म्हणून बोलवलं. ठीक. Just trying to open the balance sheet of a manufacturing concern. ABFRL, that is Aditya Birla Fashion and Retail Limited. छोटा सा ब्रांड है एक, जो पेंटलून्स, वैन यूजेन, लुई फिलिप, एलन सोली, इन सब ब्रांड्स को ओन करता है हमारे देश में. आवर बिजनेसेस लाइफस्टाइल ब्रांड्स में अगर इनके देखोगे तुम, तो दे हैव द ब्रांड्स लाइक एलन सोली, लुई फिलिप, पीटर इंग्लैंड, सिमन कटर एंड वैन यूजेन. और वही अगर यूथ फैशन में देखोगे तो दे हैव द ब्रांड्स एज अमेरिकन ईगल एंड फॉरएवर 21. और बाकी भी छोटे छोटे काम हैं इनके, ये वाले सुने हैं ना नाम तुमने? दे डोंट ओन दीज नेम्स बट दे वर्क फॉर दीज ऑल ब्रांड्स. इनके लिए ये लोग कपड़ा बनाते हैं या फिर उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ये फैशन एंड रिटेल है. आदित्य बिरला ग्रुप बहुत बड़ा है. दे हैव द प्रेजेंस इन 70 डिफरेंट कंट्रीज. या कुमार मंगलम बिरला. जाने दो, अपन धंधे पे ध्यान देते हैं. एनुअल रिपोर्ट for 22-23 they have not yet published, so we'll just check the 21-22 wala report. He is that Kumar Mangalam Birla. ऐसे जाएंगे तो दिन निकल जाना है हमारा. क्या हुआ भाई? नहीं, विल ओपन द PDF. फ्लिप बुक इज अ गुड आइडिया एक्चुअली. अच्छा लगता है देखने में, बट समय बहुत खाता है. कितने पन्ने पलटाएंगे ना. वो ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्टली जाना हो. वो ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है मेरे को. कहाँ पर?
यस, दिस इज बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट्स. इधर आ गया ना, ये अपन अपने घर पे लेके चलते हैं. इधर देखने में इजी होता है. Financial statements, these are disclosures. Just look at the income statement. Balance sheet. इसका भी टॉप पेज देखना पड़ेगा. इंडेक्स दो रे, क्या तुम फालतू की बातें करे. छोटा सा टर्नओवर 8,136 करोड़, 1203 करोड़ का एबिटा. एबिटा मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन. दैट इज कॉल्ड एज एबिटा. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. अमोर्टाइजेशन इज राइटिंग ऑफ. जब आप थोड़ा थोड़ा करके आपका एक्सपेंस राइट ऑफ करते हो, दैट इज कॉल्ड एज अमोर्टाइजेशन. ओनली 3,468 स्टोर्स इज व्हाट दे हैव इन टोटल, एंड द एरिया 9.2 मिलियन स्क्वायर फीट, दैट इज 92 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में काम करते हैं. हाँ, देयर ब्रांड्स विच वी हैव ऑलरेडी सीन. मैं जरा इनकम स्टेटमेंट ढूंढता हूँ जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं. एंड दे हैव द सिचुएशन एवरीवेयर. दे आर इनटू द डायरेक्ट टू कस्टमर, दे आर इनटू B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस. मधुरा गारमेंट इनका एक फ्लैगशिप कपड़ा बनाने का कंपनी है जिसमें लोग धागा और कपड़ा बनाते हैं. इन दैट दे हैव द ह्यूज रेवेन्यूज. ये सारे नोट्स टू अकाउंट्स क्यों दिखा रहा है? I just wanted to show you the format how it is presented, क्योंकि आज की तारीख में वो पहले जैसा फॉर्मेट नहीं रह गया है. या ये तो की मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का है. नोट्स. ऑडिटर्स रिपोर्ट. हाँ, this is balance sheet and this is the income statement. Consolidated statement of profit and loss account for the year ended 31st of March. Now observe it. Revenue from operations
from and added to that is the other income. They have not shown the direct and indirect separately. They have consolidated it. So total income, and from that they have considered, observe it, cost of raw material consumed because they are manufacturers. Then purchase of stock in trade because they are trader as well. कुछ गुड्स वो खुद के बनाते हैं और कुछ गुड्स परचेज करके सेल करते हैं. चेंजेस इन इन्वेंट्री, दिस इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एडजस्टमेंट. जैसे हमने हमारे स्टेटमेंट में यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहां जब मैंने लिखा था तो मैंने क्या लिखा, ऑन द डेबिट साइड आई रोट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड ऑन द क्रेडिट साइड आई रोट द क्लोजिंग इन्वेंट्री. इसका अल्टीमेट इफेक्ट जो है वो इन्होंने यहां पे दिखाया है, राइट. देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, दैट इज सैलरीज एंड वेजेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, रेंट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस. दैट इज हाउ दे हैव प्रेजेंटेड इट. That means they have not divided it into the direct expense, indirect expense. They have not divided it into the operating expenses and non-operating expenses. Now, of course, the non-operating items will always be shown separately. Whatever they first show is the operating items. So, first they have the total expenses, and therefore they have got the loss before the taxes, and after that the loss before tax, and they have adjusted it with the current tax and deferred tax. Deferred tax is what? किसी साल में अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है उस वजह से आपको there is a concept called as minimum alternate tax, MAT. Now MAT is compared with the normal taxes. अगर आप नॉर्मल टैक्स से ज्यादा टैक्स पे करते हो इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, MAT से ज्यादा अगर आप टैक्स पे करते हो तो, सॉरी, नॉर्मल टैक्स से ज्यादा अगर आप मैट के फॉर्मेट में पे करते हो तो दैट क्रिएट्स अ डिफर्ड टैक्स असेट, क्योंकि आपने ज्यादा टैक्स पे किया आपके नॉर्मल टैक्स से. रूल है वो इनकम टैक्स में, जब आप इंटरमीडिएट में आ जाओगे तब आपको ये समझ में आएगा. वेयरएज अगर आपने नॉर्मल टैक्स से कम MAT आता है तो आप नॉर्मल टैक्स पे करते हो, तो उस केस में देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. सो दैट इज अकाउंटेड एज पर AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस, और उसका वो एडजस्टमेंट इन्होंने यहां पे किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. देन लॉसेस फॉर द प्रीवियस ईयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो व्हाट दे हैव ट्राइड टू शो इज दे आर ट्राइंग टू प्रेजेंट, सर इतने लॉसेस में कैसे चल रही है कंपनी, 150 करोड़ रुपए का लॉस है या 120 करोड़ का लॉस है कंसोलिडेटेड वाला. If you would check out, they have got the depreciation and amortizations of 997 crore. Loss is not the cash loss. Loss is because of depreciation and amortization. Depreciation and amortization is a non-cash expense. तो इनका भले बिजनेस में लॉस हो रहा है पर कैश का लॉस नहीं हो रहा है. That's why they are able to sustain. All right, remember that the businesses sustain because they are continuing their activities, not because they are stopping their activities. All right, so this was about the income statement in vertical format. This is called as vertical format. इसी तरह से now we have to discuss the format of balance sheet, and then we'll start talking about the adjustments, but those things will be continuing in tomorrow's lecture. That's it for the day. Thank you very much. Bye-bye.